तो आपकी कोई स्पेशल डाइट होती है कोई? I eat everything and anything, you know. I got into हलीम a lot. कुछ एक 1.5-2 साल मैंने हलीम खाई. और मेरा एक्चुअली ये है कि जो चीज़ मुझे सुला देना खाने के बाद और वो आपको ज़्यादा मोटा भी ना करे, ऑल दैट्स माय डाइट. अदरवाइज आई कैन नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर डाइट. सो माय माइंड टेल्स मी इफ आई एम डन विद फूड, सो आई एम ओके विद इट. हाँ, फिर वो कुछ भी हो. आई वुड थिंक बिकॉज जीतो पाकिस्तान में आप तकरीबन 4 घंटे आप एक हैवी एनर्जी में चल रहे होते हैं. तो मैं सोचता था कि कुछ कम ही खाते होंगे और फिट रखते होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप हलीम खा के सो जाते हैं. आई हैव डन जीतो लाइक बहुत सारे अलग अलग तरीकों से. आई हैव डन बिल्कुल ही स्टार्व्ड माई सेल्फ एंड डिड इट बिकॉज आई थॉट कि दिस इज वर्किंग. देन आई एट लॉट ऑफ बिरयानी एंड आई डिड इट एंड आई थिंक दिस इज वर्किंग नाउ. सो देयर इज बीन, यू नो, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कीप्स मी गोइंग. सो नॉट नथिंग इन पर्टिकुलर. आई थिंक इट्स अ फेज. खाना इज अ फेज. कभी कुछ आपको लगता है. आजकल मैं चावल बहुत खा रहा हूँ बट आई एम फिट. तो मैं अलग अलग चीजें. But chawal is very, you know, I don't eat roti at all. I'm not a roti lover. I'm not a roti lover but at मुझे all. I was told बहुत साल के चावल तो आप सोच भी नहीं सकते. देखिए मोटा लोग, हाँ चावल वही लोग उल्टे हो गए. चावल का है चावल. मैंने कहा अच्छा यार ग्लूटेन का इशू है कोई? No, I've never. मैं भाई हमारे I'm from like my family is Pathan and it's a big thing कि मैं चावल खाती थी और रोटी नहीं खाती थी. My nani used to be like रोटी खाओ, रोटी से जान बनती है ना. पठान रोटी खाते हैं जी. And I used to be like, no, they are fond of roti. Okay. Right, and meat. That rogni, that bada naan. Okay, yes, of course. हाँ, खमीरी. अब मिलता है वो, because एक ज़माने में वो बड़ा एक गेम था उसका. I'm sure वो चरसी टिक्का पे मिलता होगा. What's that? चरसी टिक्का. टिक्के भी चरसी हो गए अब वहाँ. But yeah, I love चावल since I was a kid. मैं अगर चावल कहीं देख लूँ मेरी हालत खराब हो जाती है. हम तो सिंधी हम तो खाते ही चावल हैं. My gym instructor told me that it's pure cellulite, so I'm avoiding it. Yeah, I mean इतना डिटेल में मैं नहीं जाता. मैं समझता हूँ बस मैं उसको बताता हूँ अपने ट्रेनर को, मुझे ये तुम्हें लगता है ठीक है. कहते हैं हाँ ये चलेगा, तो वो ऐसा हो जाता है. मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खा लें लेकिन फिर you work it all out in gym. यार there's so many different theories to that. और ना मेरी कोई वैसी बॉडी है कि मैं बैठ के लोगों को ज्ञान दूँ. तो I'm a fat person basically. So you see what I am right now is a lot of effort. मुझे ऐसा लगता है. तो it's not body बहुत ज़्यादा, but I think I'm healthy and I play a lot of cricket and I'm into sports. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज से 10 साल पहले भी उतना नहीं खेल पाता था जितना मैं अब खेल पाता हूँ. So it's because the kind of workouts and जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, it helps my stamina और आपको एक that is more important. मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, and also you have like an earphone, like you're always on the phone. Is it on? Oh my God! No one tells you. Yeah, this is the third time. This is, by the way, the third time we've sat in an interview and he's been like, oh. I even shot one entire sequence like this. और वो हम टर्की में शूट कर रहे थे और मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने सारा सीक्वेंस शूट करने के बाद एंड में सलमान रज़ा was on the camera and I told him, सुने ये रह तो नहीं गया था. Like, हमने तो देखा ही नहीं. अब वो जब देखा तो दोबारा फिर सारा हमें शूट करना. Amazing. Salman bhai is an amazing DOP. Yeah, that from OG, back in the day. OG DOP. Oh, yes. Saqib Malik brought him on to. Is that right? Yeah, I didn't know this. He was a light technician. Must have been. So everyone, yes, yeah. Azanfar Saab. Bol was shot by Salman. Yeah. Salman. Most of Shoaib Saab's films have been shot by Salman Raza, right? Salman Raza, well, most of the iconic things I think in Pakistan. Yes. Like initial days में तो सलमान भाई was. Khamaj की video. Khamaj. I did my first commercial, the big commercial. साकिब के साथ एक सब कह दो डे होता था. So it was like an alternate to Valentine Day probably, I don't know. तो वो हमने किया था. उस टाइम पे कैमरा भी वो वाला होता था. I sound so old. We are. I mean, this is age is a thing that in show business is frowned upon. Strangely enough, the more you look old, the more people kind of go like, "यार उसका time पूरा हो गया है." हाँ, of course, ये तो है. Harder for women than for men. Strangely enough. It's both ways now. Definitely. No. Oh, I disagree. No, they're far. I don't think if I were. They do put like you in this box. Yeah, true. And they then say, you know, there's like a shelf life or whatever for an actress. But I think we are proving it wrong. People like me. Yeah. But it's a strange thing to transition from
being that hero to a father figure type role as well. Why father figure only? I mean, it can be. जावेद शेख साहब मतलब कितने gracefully transition किए हैं. यार उनका अलग है मामला, वो exceptional एक case है. और see, I tell you a story about Sheikh साहब. I'm so sorry. We were doing Namalum Afraad and he just came back after Om Shanti Om's shoot. So I remember the very first time this new light, उस light का मैं नाम भी भूल गया हूँ. बहुत सारी ना ऐसे लग के आप कपड़े से आपको नबील क्या कहते हैं लाइट को? स्काईलाइट नहीं होती वो जो डिफ्यूज करके आती है. खैर वो एक बड़ी पूरी नहीं वो जो गली पूरी उसने लिट कर दी. सो खैर तो वो नई चीज़ें उस टाइम पे आई हुई थी. एंड शेख साहब एंड मी वर सिटिंग एंड वी वर वेटिंग फॉर अ चाय एंड दे वर ऑल बिजी प्रिपेयरिंग द शॉट एंड एवरीथिंग. ही जस्ट बिकॉज वो चाय नहीं आ रही थी, कोई 20-25 मिनट गुजर गया. तो मैंने कहा यार अभी आ जाएगी अभी. तो शेख साहब गोज पता है फहद वहाँ ना देयर वाज अ बफे और आई हैड माय ओन वैनिटी वैन एंड वी हैड नो वैनिटी वैन्स बैक देन. मतलब वी वर जस्ट स्टार्टिंग, यू नो, फिल्म इंडस्ट्री अभी गियर अप ही हो रहा था मामला. बट ही सेड फहद, यू नो, आई थिंक कि अगर आप एडजस्ट कर गए ना तो ये इंडस्ट्री चल पाए. अभी दिस इज़ जस्ट वन-on-one कॉन्वर्सेशन मी एंड शेख साहब आर हैविंग कि अब ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठ के और एक्सपेक्ट करूँ कि, यू नो, यहाँ पे आएंगे वो शाहरुख आएगा और मुझसे पूछेगा आपने क्या. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट कैपेसिटी. हम अपने हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ कर रहे थे. अगर वो आदमी उस दिन एडजस्ट ना करता और वो वही सोच रहा होता कि यार मैं वहाँ जो देख के आया था वो यहाँ मुझे चाहिए, दिस इज़ फन. सो आई थिंक वो उनका एडजस्ट करना जाना ये बहुत बड़ी बात है हर जगह. Actually, yeah, that is what. But I mean, if you look at Hollywood, वो Bryan Cranston played Breaking Bad का role at such a late age, and he did such an amazing job at it that you kind of go like, there should be no age. There isn't, and that's what I mean. Like when I say कि does it mean that we don't want actors who are older to play the hero? Of course we do. There's a reason why they're doing that, because people are going to watch them, right? But let's make it normal also. Let's talk about it. I talk about the fact that I am divorced. I have a 12-year-old going on to 13, and I will talk about it openly so that I have to be comfortable with it first. And you can normalize it. I can normalize it. I am in the position to normalize it, which I think is very important. This is a very purana, you know. आपको पता है इरफान खान का एक इंटरव्यू है, लंच बॉक्स जब वो बना रहे थे ना, तो उसके अंदर डायरेक्टर साहब, आई डोंट नो इफ यू सीन द फिल्म. Of course, excellent. Excellent film. No dialogue and amazing film, right? Like किस तरह कर लेते हैं. That film, he was like, the director's like, you're an old guy in it, and he's like, don't get Nasiruddin Shah. So he's like, why do you want me to get Nasiruddin Shah? Like, if I play an old actor, फिर मैं वापस जाऊँगा तो मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा. That's what Irfan Khan said. And he said, the director said a very smart thing. He's like, it's important that your character feels old. He's not old, he feels old. He ended up playing that role. And it's a classic film, right? तो वो एक डर तो एक्टर में उधर भी बैठा हुआ है. नहीं देखिए, उम्र का मुझे भी होता है, मैं अपने बाल शाल करता रहता हूँ इधर. नहीं वो तो होता है, सफेद बाल आते हैं मैं काटता हूँ यहाँ से. नहीं वो तो होता है. We are so exposed. You can't even imagine that feeling of exposure. In HD, इतना बड़ा close up. We are so exposed in front of our audiences. But I do think, you know, it is hard. आज फहाद ये बात कर रहा था on the other place where we were at. It is hard, and you'll see every hero, and when you say hero or heroine, you know, the quintessential sort of hero heroines, they do go through a slump. That weird time is when you are adjusting. And you're like, what do I do? Because आपका पूरा career has been based on you are playing the girl, the boy. So that is the period. अगर आप उससे गुजर जाएं, then you can be, you know, an Al Pacino or Bachchan or. You metamorphosize into a butterfly. What happens? क्या होता? Like my I think how I dealt with it. I think I saw it coming 10 years ago. Achha, you had started. I don't know. No, I'm telling you why. Because no, Fahad. I'm so listen now. But when I was doing dramas and all, so I was getting similar kinds of, you know, characters, and I was not getting exciting. It was not exciting at all for me.
So यार, I thought, you know, one day Momina will call me or JJ will call me or, you know, जो भी 4-5 players हैं आपके पास, and they'll offer you a certain thing, so you're dependent, you know, somehow. So I thought, you know, maybe I should, you know, take a back seat and start producing then. So I stopped acting completely. और जैसे ही मैंने एक्टिंग से भागना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगा एक्टिंग मेरे पीछे भागना शुरू हुई. मैं सच बात बता रहा हूँ आपको. तो मैंने छोड़ा और वो मामला फिर ऐसे. अदरवाइज मेरे हिसाब से माई एक्टिंग करियर वॉज डन 10 years ago. I had acted so much, all kinds of projects. At one point I was doing 4, 5 projects. So I think ये भी एक चीज़ होती है कि आपको शायद एक हीरोइज्म के पीछे ना भागे. And then because we try and put so much effort, you know, कि हम ऐसा ही हो, or maybe replicate what it was a couple of years ago. तो you end up, you know, overdoing it. So आप देखें जितना भी बड़े एक्टर, जो बड़े स्टार्स होते हैं, they kind of overact in the later years of their life because they're trying to reenact what they've already done. Because you see, it gets tougher, right? There's a generational sort of, yes, you were it for a generation, and that happened to Brando. Yeah. Yes. That happened to Then he did Godfather. Then he did Godfather, right? So it happened to, I mean, imagine, it could happen to Brando. So, it has happened to every person who gets trapped sort of in a heroic or in a very star but setup. They don't write. Like Brando had that Godfather Don Corleone वाला रोल मिल गया उसे, जो लिख रहे थे वहाँ पे लोग, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था ना, बच गया, वरना बहुत होती उसकी. मतलब हाँ, उसके वो मोटापे पे वो भी बड़ा इंसिक्योर था. अपोकलिप्स नाउ की डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यूज आप देखते हो, बहुत अजीब. आज के दौर में निकल आया तो लाइट ना हिलाओ, कैमरा हिलाओ, इस तरह की बातें करता था. तो वो भी था उसका. बट वहाँ पे रोल कम से कम एक लीड बंदा जो प्ले कर रहा है, बूढ़ा होते हुए भी उस तरह के रोल्स लिखे जा रहे हैं. लाइक अबाउट श्मिट हैज जैक निकलसन एज एन ओल्ड मैन इन इट, you know, and that role was written. But if you don't write the role, because people don't write that role, they write roles that create the role. So I think when like Noman Ijaz, he's there. Oh, look at him. Come on, look at level. We keep talking about Irfan Khan and all these people because we don't listen to their stories. And again, age. Noman Ijaz is, I remember he was in what? It's true. It's off, and he was just like, and even now. Look at how he will pick up. That's actually untrue. There are characters which are written, but they're never in the lead. The lead is all about people, the two ladka ladki getting together. But then I would but I feel that, you know, you make the lead. Believe me, he does make it. He makes it his. Yes. He really does. Yeah. He becomes Sometimes a lead. the lead even doesn't, you know, somehow. Yeah, he becomes the conviction lead. से वो कर पाता है, तो वो इसलिए I think आप एक बड़ी अच्छी बात मुझे एक डायरेक्टर ने बताई थी कि यू नो, आप मुझे बताओगे कि मैंने एडिट कहाँ करना है. एन एक्टर कैन एक्चुअली डायरेक्ट अ डायरेक्टर विद हिज परफॉर्मेंस इन अ वे कि वो आपको एडिट करे या वो आपको एडिट ना करे. सो अब वो लीड अगर दे रहा है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे उसका. सो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स, जैसे आप बात करते हैं, यू डोंट ऐड वैल्यू टू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स मुझे आजकल उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, दे वांट लॉट ऑफ सपोर्ट अराउंड देम, यू नो, बिकॉज दे वांट इसमें इसको कर लें, इसमें इसको कर लें, इसमें इसको कर लें. ओ भाई, तू क्या करेगा? मुझे तो अभी तुझे घास करना है, यू नो. आई वांट यू टू ब्रिंग दैट वैल्यू फर्स्ट एंड देन टॉक अबाउट. सो दे आर लुकिंग फॉर अ पैकेज, दे आर नॉट अ पैकेज देमसेल्व्स. सो लॉट ऑफ एक्टर्स आर सच अ ह्यूज पैकेज के उनके इर्द गिर्द, यू नो, फिर बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, फिर आप उसी को देख रहे होते हैं. तो वो हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी. एंड देन वी हैव लॉट ऑफ एक्टर्स, पीपल लाइक सलीम महराज, पीपल लाइक हमारे बहुत ही कमाल के राशिद फारूकी. आई लव हिम, बट वी डोंट टॉक अबाउट देम, यू नो. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आई मीन इट्स अ स्ट्रेंज थिंग, बट दिस इज अ वंडरफुल थिंग यू सेड कि एक एक्टर जो है ना, वो एडिट को एक हद तक कंट्रोल कर सकता है. वही फ्रांसिस फोर्ड कोपला के एक एडिटर थे, वॉल्टर मर्च के नाम से. वो कहते थे कि ब्लिंक जो है ना, ये इससे भी एडिट हो रही होती है. तो अगर आपने इस तरह स्लो ब्लिंक किया है, या जहाँ पे एक्टर ब्लिंक कर देता है, वो एडिट हो जाता है, वो कट बना रहा है. तो एक तरह से एक्टर के इतने हद तक वो प्रेपोजिशनल कंट्रोल है उसका कि वो एक प्रेपोजिशन की तरह एक ब्लिंक मार रहा है. कब ब्लिंक, वैसे अब समटाइम्स इट गोज वेरी रॉन्ग, यू नो. एक्टर्स हार्डली, नाउ ही इज नॉट ब्लिंकिंग,
Yeah. I'm not gonna give you the edit. I swear. अरे बस कर दो यार, I swear. Yeah. But yeah. Yeah, but give me some tips on this blinking acting thing, because यार मैं जब आप तो टीवी champion करता हैं था इस ना, तो चीज़ मैं के। आपको बताऊं तो मेरे बड़े फॉर्मूला मुझे पता था। Really? हाँ, वो मैं थक गया था उसमें, बोरियत होने लगी थी कि अब यूं देखूंगा और ये करूंगा। तो मुझे फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्टिंग में बहुत सारी भूल गया हूँ एक्टिंग। मुझे वो भूलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं फिर ढूंढता हूँ कि करना क्या है। वो नर्वसनेस, वो डिस्कम्फर्ट, यू नो, इफ़ यू फील दैट यू हैव दिस कंट्रोल over your craft and everything, I think that is it. फिर तो किस्सा फिर boring हो जाता है आपको। And that's why actors actually take different roles. Yeah. They aren't trying to prove that them to you that they're versatile. They're actually doing it for themselves. Yes. You're just constantly like, okay, because over time you've got some tricks in your bag, you know, and actually. You're bored of that. You're bored. You're like, I don't want those tricks. Seriously? I just don't want those tricks. Like if you've seen that Leonardo scene in Tarantino's movie, the last one. Once Upon a Time. Once Upon a Time. That happens to me so The flamethrower many times. No, the one where he forgets the line or couldn't get it right, and then he goes back in his vanity and talks to himself. I have done that so many times. Yeah. और मैं खुद को गालियाँ भी मार दी, मैं तुमसे हो नहीं रहा, तुम अपने आप को पता है। We do that all. It's so relatable. It's so relatable. I don't know कि आम आदमी उससे इतना कनेक्ट कर पाएगा या नहीं, लेकिन I know you get off days. You're off. You're not a computer, you know, कि उस दिन हो रहा नहीं भी होता, और बहुत दिन आते हैं नहीं होता आपसे। But then you have to cover it up, you know, like किसी को पता ना लगे कि नहीं हो रहा। लेकिन एक दो दफा हुआ है मेरे से हो जाता है। मैं बड़ा ओपनली चिल करता हूँ। कैरेक्टर में इतना ढल गए कि अपनी सारी टेक्निक ही भूल गए और कैरेक्टर ही बोल रहे हैं आगे। अगर डायरेक्टर बोल गए तो टेक्निक ही है ना, फिर ठीक ही होगी, टेक्निक ठीक है आपकी। अब वो मेथड एक्टिंग की टेक्निक आ गई वहाँ पे। But I was recently working with S. Rahim, and it was an honor for me because like I kind of grew up on those commercials, and वहाँ पे वही similar thing, like 5वीं टेक 10वीं टेक हो गई है, कभी कुछ मिस कर रहा हूँ, कभी कुछ मिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सारे देख रहे, embarrass हो रहा हूँ, it's like how do I do this, and I'm getting nervous and everything, and I have to calm my nerves and somehow deliver. And if that's every day, the amount of stress hormone, cortisol running through don't you, even ask. I don't know क्या बंदा किस तरह manage करता होगा। Don't even ask. But when I watch actor in law and you know you're speaking in the court और साथ साथ चीख भी रहे हैं और साथ साथ आंसू भी निकल रहे हैं, I'm like ये तो मतलब pro आदमी, इसको तो कोई मसले नहीं होते होंगे। नहीं होता ना, कुछ मिल नहीं रहा। Do you take a lot of takes or do you just? I think we shot it a couple of times, but वो ऐसा ही था। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत लाइंस अपनी पहले से कर लेता हूँ। इवन मैंने ये ड्रिल शुरू की थी when I did Mahira. Have you seen Mahira? No, but I want to. So Mahira was supposed मेरी very उर्दू is heavy. not so good at all. So मुझे वो उर्दू जो है ना वो याद करना बहुत ज़रूरी था, so that मैं बाद में उसके मतलब की तरफ चला जाऊँ। अगर मैं याद ही करता तो मैं अपने USB में ना अपने डायलॉग्स अपनी आवाज़ में, द राइटर सरमद सहबाई, उसको मैंने बोला था, वो उन्होंने इज़ वेरी काइंड, उन्होंने करके दिया। तो मैं सुनता रहता था 24 घंटे। तो वो जब सुनता रहता था मैं, तो वहाँ से मैंने ड्रिल शुरू की थी। तो मैं अपना स्क्रिप्ट, कभी मुझे नबील सीन बोल के भेजता, मैं उसको बोलता हूँ यार क्या तुझे लगता है कैसे होना चाहिए, तो ये मुझे भेजता है करके। तो फिर मैं पहले तो वो समझने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से इन द सीन। वंस यू गेट दैट एंड यू नो द लाइन्स, देन यू कैन प्ले अराउंड विद इट। अदरवाइज आप उसी ड्रिल में फंस जाते हैं। अच्छा हाँ, फिर वो रोट रिपेटिटिव और वो do you give a different take every time or is it the same take? I don't know, sometimes you can because but then you'll be stupid. It's not theater, कि आप हर बार अलग अलग चीज़ करें, आपको continuities और ये सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। It should not be different every time. But it should be कि पहली बार जो जैसी आपसे हुई है, because first take I'm a one take actor. पहली take जो मेरी होती है ना वो I think every act, नहीं भाई, रिहर्सल्स वाले होते हैं ना कुछ लोग, तो लाइक बहुत सारे आप रिहर्स करें हमारे साथ बैठ के, 10 दफा रिहर्स किया, वहाँ गए बिल्कुल फारिग हो गया। तो मेरे साथ नहीं, मुझसे नहीं होता ये। तुम रिहर्स नहीं करती? नहीं। हाँ, but it depends. If someone wants to rehearse with me, I rehearse with them. I do that. But yeah, I feel like, are you one taker or you like to take many takes?
No, it's not about one No, no, taker. no, no, The no. first taker. He likes his first take. Yeah, I like prefer your first all take. my directors have said, actually directors love a first take. Huh. Yeah, if because they are directors. yeah, but It's just in my case, they don't like the first take. well, look, no. Take a hint, buddy. No, but listen, Maybe I'm it's in the wrong also profession about the here. written word. What are you saying? What have you been given to say? I'm telling you, even when I'm standing and doing a commercial, I really need to understand, absorb, and think about what I'm saying. Even if it's बालों में shine है तो सब कुछ fine है. Like something as like this is like 10 साल पहले की मैं बात बोल रही हूँ. Nothing to do with the brand I can't today. see how many ways you could say that. Many ways. Really? But it's also about आप लाइनों पे ईमान लाते हैं ना? That's what they say, right? So if an actor is nothing without the written word. Yeah. So when you have the material, that speech of his was, no, it's okay. It's like it makes you be like, I'm gonna give it. Like, I'm gonna ये वाला. belt it up. So how do you would you read a script? How do you select the projects that are coming your way? What's the criteria? Do you, I mean, if he's directing, I would be like, I don't even need to read the script. See, with him, it's not just कि ये आपके साथ एक project discuss करता. हाँ. So it's been always the case कि we know there are like 2-3 things that they're working on. और उस पर आप जैसे अब कंसेंसस होता है, आपको एक पता होता है कि यार चलो ये अच्छी 3 चीज़ें हैं. ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई स्टूपिड चीज़ ही उठा लेंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा. तो वो तो एक होता है कि यार चीज़ अच्छी है. और सबसे बड़ा बात मुझे जो लगता है ना वो ये होता है कि कॉम्बिनेशन क्या है. आपका समटाइम स्टोरी इज़ वेरी गुड बट उसको डायरेक्टर जिस तरह सुनाता है वो बिल्कुल ही. और मैंने देखी हैं ऐसी फिल्में, कुछ फिल्में मैंने पाकिस्तान की पढ़ी हैं जो ऑन पेपर दे वर वेरी गुड. अगर उनको तरीके से बनाया जाता तो वो ऐसा डिज़ास्टर नहीं होती जैसा वो हुई थी. वो डायरेक्टर ने तबाह किया. उसमें एक्टर्स का भी कोई कसूर नहीं कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा ना तो कोई डायरेक्टर वो है ना जो आपको बताया नहीं फाद यहाँ रुकना है, यार ये ज़्यादा हो रहा है, या ये मैं नहीं चाहता हूँ. बिकॉज एवरी टाइम मैं अगर खड़े होकर वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है करने का तो फिर तो डायरेक्शन लेस काम चल रहा है ना आपका. सो एटलीस्ट इन द एंड यू शुड नो कि द इंटायर पिक्चर वो एक किस डायरेक्शन में जा रही है. And the character should also help, to take the film towards that direction. Instead of कि आप अपना ही एक अलग मंजन बेच रहे हैं और डायरेक्टर इतना बड़ा फैन है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं फहद भाई ने कर दिया. So I think it's just not that. It's the package, the complete thing. मेरा तो एक्टिंग करियर ख़त्म ही हो गया था तकरीबन. तो ये मुझे आके इसने फिल्म सुनाई और मैंने कहा ये है तो बहुत अच्छी भाई, ऐसी बना लोगे. तो इसने मुझे बोला कि इससे अच्छी बनाऊंगा. बिल्कुल ऐसे ही ना, मैंने बिग क्लोज-अप मैंने ये तो, but then he actually proved it, so sir, he really proved it. He did. And he's been proving it ever since. I feel like, I mean, him, Nadeem Beg, Ahsan, Asim, and see हर किसी का एक कुछ, जैसे नबील कभी अमीर फिल्म. There's also Kamal Khan, Lal Kabutar wala. Brilliant. He's also Oh yes, he's good. Yeah. Like this film in particular, I think ये यही बना सकता है. We should mention the name of the film, I suppose. Quad-e-Azam, Zindabad. Yes. Honestly, like this is such a Nabil film. Yeah. It looks like the scale has gone up. अब बड़े पैमाने पे फिल्म बनाई जा रही है और इसके अंदर जिस तरह के स्टंट्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की मुझे शॉट्स नज़र आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि अब एक और लेवल चुक दिया गया है फिर से. जो हमेशा वो चुक रहे होते हैं, अब एक और दफा चुक दिया उन्होंने, अपना ही लेवल सेट बड़े किया. स्टंट्स और बड़ी बातें हैं इसमें. हाँ, बड़ी बातें हैं. कुछ बता दें कि मतलब क्या हैं ये बातें. भाई कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं वो हर सीज़न की कहानी होती है. और पाकिस्तान क्योंकि नाजुक मोड़ से तो बचपन से ही गुजर रहा है, आप सभी जानते हैं ये बात. सो बात वही कि ये रेलेवेंट है हर दौर में. तो ये वो कहानी है जो आप कभी भी देखेंगे ना. ऐसी मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान बदलेगा एंड ऑल दैट. बच्चे अगर आप 40 साल पिछले 50 साल उठा के देखें तो ये फिल्म किसी भी टाइम पे आप बना सकते थे एंड इट विल फिट एग्जैक्टली. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा आउट ऑफ प्लेस है, ऐसा का ये सब है. It's relevant for all times. All times. And I hope कि it's not the case. आने वाले. It's using the image of Quad-e-Azam. और Quad-e-Azam हमारे जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, सेक्युलर भी थे एक हद तक और बिल्कुल थे. It's not about him. It's not about him at all. It's not about this whole thing that you're talking. Okay. It's about entertainment simply. And it's about one thing. It's about discipline and it's about calm
it's about tolerance. ये सारी चीज़. That's what I was getting at. The It's tolerance about, part so, of so it. the tolerance part The tolerance of it, which part is is what what he So we was. don't want- Which is what he सबकी was. कबूलियत हो. Right. सफेद है हमारे झंडे में भी. बिल्कुल बिल्कुल है. But और it's not just, sorry, you yeah, go continue. on. No, go on. So सिर्फ ये नहीं है कि हम एक in a larger picture, you know, कि इस मुल्क में Quad-e-Azam was the founder of the nation, of course. आपको पता है कि क्या situation है. तो आप उनकी कुछ बातें थी जो बहुत आज भी होनी चाहिए, जिन पे मुल्क बना था, बस उसको याद कराने की कोशिश की. और इसके अलावा कोई और मुद्दा इसमें नहीं है. बड़ी सीधी सीधी बातें जो हम बचपन से देख रहे हैं, हमने उसको एक अच्छे से पैकेजिंग करके आपको एंटरटेन करते हुए आपको वो सारी बातें बताएं. आपको परेशान नहीं करेंगे कि आप आ गए हैं तो अब आपको सिखा के भेजेंगे और ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं. नहीं वो अच्छा है because it's never pedantic his films, like it's never like कोई एक lesson आपको beat over the head कर रहे हैं उसके साथ, even though it's got a lesson. But actually if you beat the lesson, nobody you're never listens. going to learn, Yeah, right? whatever. Look at like when our parents used to be like, oh, it's actually a very intelligent way of really speaking to people. Yeah. You do it lightly, you give your message, but you do it in a way that आपको heavy भी नहीं लगा, आपको मज़ा भी आया, और आप वहाँ से निकले और आपने फिर थोड़ी देर बाद आपने बात भी की. में आ गई वो. हाँ. और अब वो आप चलती रहेगी. Yes. और वो असर करती रहेगी. Yes. आपकी प्लमिंग के अंदर से गुजर के. बिल्कुल. So that is it. That is kind of. I think that's the best thing about entertainment as well. Like जब आप हंस रहे होते हैं, you've got your guards down. That's when the lesson can actually. That's work, actually right? actually what it is. Amazing. Yeah. And so when is the film is coming out on Eid? Eid. Inshallah. Eid al-Azha. It's अभी आपका जो आपने नोट किया होगा जो पिछली फिल्में आई थी ईद पे, उसके ऊपर एक बड़ा एहतजाज भी हुआ था. How do you guys feel about it? कि आपको लगता है कि बाहर की फिल्में बैन कर देनी चाहिए? No. We can't afford that right now, can we? The cinemas can't afford it. I mean, we can't afford it would be in the actors' I would interest. love to see Thor. I'll go and watch it. Absolutely. So you can't just tell people don't do this, don't do that. We'll have to come up with better films. We'll have to come up with good projects जिनको आप own कर सकें. बाकी, and then I tell you what, all these films have actually done good business. अगर आप देखें 7-7 करोड़ 8-8 करोड़ पेंडेमिक के बाद, आपकी इंडस्ट्री की कोई इस तरह की वो भी नहीं है. एक अगर बजट ही 7 करोड़ का था तो वो तो पब्लिक को नहीं पता ना यार. आप ये मैं अपना बजट बता के तो फिल्म पब्लिक मैंने इतने की बना ली है, मुझे इतने वापस देना, ये तो कोई लॉजिक नहीं हो सकती ना. द थिंग इज कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोग घरों से निकलेंगे और ये फिल्में देखेंगे. मैं और नदीम बेग अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे और he called me, I was in Turkey and he told me, फहद क्या लोग आएंगे? मैंने कहा I don't know and I was going to watch Top Gun, उसी वक्त मैं जा रहा था. क्या निकली इस बार? क्या निकली है, यही मसला ना. हम लोग बात ये है कि आप ये बातें करने की नहीं है, ये बड़ी irrelevant बात है. हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी फिल्म बनाएं. शायद आपको हिट पड़े, जैसे मुझे लगता है उन्होंने हिट थोड़ी ली है, हमें फ़ायदा होगा उसका. एटलीस्ट लोग घरों से निकले तो गए तो फिल्में देख, आदत तो डेवलप हुई दोबारा. पर ऐसा क्या है कि हमेशा होता है कि एक मैंने एक्चुअली इंटरव्यू नबील का भी देखा हुआ है कि जामी भी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हमारी वो स्क्रीनें खा जाते हैं और नबील ने कहा था आप अच्छी फिल्में बनाएं. आई एम सॉरी इफ आई एम पैराफ्रेजिंग यू रॉन्ग, बट आपको अपनी फिल्म की सलाहियत पे रिलाई करना चाहिए ना कि वो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो लोगों को खींच सकती है. अगर डॉक्टर स्ट्रेंज आ रही है एक फॉरेन ज़ुबान में और वो लोगों को खींच रही है, तो मतलब कि it's already there's a language barrier that but they're still being able to somehow pull things through. I think there are other important things to talk about. You know, there are many other important things to talk about. Right now, there's been a tax relief where you know, which is amazing. Which is amazing. So what we need to talk about is not banning other films or not showing films for this many days. I think what we need to really talk about is, do we have the right support system? Are we being supported by the government? Are the cinemas supporting all kinds of classes when they sell a ticket for 900 rupees or 1,000 or whatever, however much it is? So that's expensive, right? Yeah. So these are all things that we can talk about so that it's actually easier for the filmmaker to make the film, for the person who's coming, the audience, to buy a ticket. Yeah. You know, these are all things we can talk about. Because when we talk about, you know, कि आप अच्छी फिल्म बनाने, somewhere everyone's really doing what they can do. Yeah. What they think is good. From where the industry is at, it's at a place, and Yeah. within that industry, whatever you can make. Yeah. Hollywood is a
that film that it's competing with is मजे की बात $100 है, million हमारा film. डायरेक्ट जो है ना हॉलीवुड, हमारा कंपैरिजन ही डॉक्टर स्ट्रेंज Strange है जो $100 million की फिल्म है. मतलब पैसा भी देखो, इट्स नॉट द पैसा यार, बात ये नहीं है. फिल्म बनाना इस मुल्क में बहुत आसान है, फिल्म दिखाना बहुत मुश्किल है. वो स्क्रीन्स कम है. स्क्रीन्स को भी छोड़ दें आप, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, अब ये बहुत अलग चीज़ें हैं. ये एक आम आदमी को ना बिल्कुल ही लगता है कि यार ये तो बकवास ही है. ये तो बकवास, बिल्कुल. तो इस बकवास को रहने दें. हमें इतनी अच्छी फिल्म बनानी पड़ेगी कि लोगों को पता चले और लोग जाएं और देखें और लोगों को बताएं. तो हमारे लिए इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट दैट्स हाउ इट इज, सो वील हैव टू एक्सेप्ट इट. Yeah. Okay. I mean, that makes sense. But, you know, like every time, every Eid, there's some releases, and a lot of directors have this feeling, why was my film taken off? And then there's this ehtijaj, which something that I had to address anyways. Yeah, well, I mean, you can't blame people. It's your baby, and you want to see it up on screen. Yeah. You know, it is really like having a baby. You cook it up, you have 9 months, and then you show it to the world. My baby is not getting the same grades Exactly. his baby is getting. Right. So it's yes, it is painful. So obviously you complain, but the thing is, he's absolutely right. Unfortunately, for many reasons, even in, by the way, Hollywood. Tell me, where are your smaller films going? Netflix. Right. Lower end box office And budget. what are we talking about? Top Art Gun cinemas. and Doctor Just Strange. that. Look Yeah. at this. Huh. Matlab, look at the level of the films we're talking about. Yeah. The summer blockbusters. और ये डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मार्वल एंड डीसी, what storytelling is that? It's the new mythology. बस द थिंग इज के इसलिए छोड़ दें हम, ये बाहर सब जायज़ हो जाता है. हमारे यहाँ सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम ये तो नोलन जैसी क्यों नहीं बनाई इन्होंने फिल्म. हम तो हाँ, वो स्टैंडर्ड भी इतना हाई अपसेट हो गया. इवन तो नोलन की पहली फिल्म इज मोमेंटो इज रियली लो बजट फिल्म, बट विद इन दैट बजट ही वाज एबल टू डू. टाइप ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है वैसा वाला. मैं एंटरटेनमेंट पे बिलीव करता हूँ. सर आप एंजॉय करेंगे. नहीं की ना, खत्म हो गई बात. अब जबरदस्ती थोड़ी है कि मतलब आप करनी ही पड़ेगी, पर नहीं की. दिस इज द थिंग कि हमें वी शुड अग्री टू डिसएग्री. बिल्कुल. सिनेमा इज फॉर एवरीवन. किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा. तो ये वाला चक्कर है. So Mahira, you didn't tell me how you select a script. I mean, there's a camp. There's also camps, right? There's the Hum TV camp, which is mostly run by women. Right. Camp, and like you fall into that camp a lot of times. Right. And then there's the ARY camp, which Khalilur Rahman Kamar and everybody used to fall in. So, do you select based off of these camps? कि ये मेरे camp से आ रही है, or do you read the script? How do you? Not at all. I am a creature of comfort. I feel I like it when a producer is completely involved. And so I found that with Momna, where I could call her and be like, but why is she doing this? But why are we? And she could reply like this. So for me, that was a very big thing, right? But I've done very few serials. I've done about 4, I think. So it's really little work. I would say. One of them was Khalil Saab's. His own real life story. His own real life story. Yes. So how did you ever get to interact with him? Absolutely. So what was that like? I played the love of his life. Yeah, and Adnan plays him, Yes. right? Yes. So what was it like working with him? Is he as scary as he comes across on TV? No, actually, he wasn't scary. He was amazing, and he was great to me. He loved what I did with Sadke Tumhare. And he wanted me to do other stuff that he had written. Oh, mashallah. That's yes. But that's then a I big said, compliment as well. But then I said what I said, and then, huh? What did you say? Well, I took a stance. I thought what he said was not right. Yeah, that whole period where he Right. said a lot of things on TV, Right. right? Yeah, but I suppose So it means that I lost a lot of work. from him. Yeah, but it doesn't matter. Huh? Yeah. So anyway, but I change. So it depends, right? So in the beginning, you're like, okay, I'll do a Humsafar. It sounded nice about this girl. जब उसका, it's after the child is born, तो वो शेरनी बन जाती है. And I had a baby, so I was like, Perfect, relatable. Yeah. So that. Then I went to him and I said, now you give me something completely different. Please. Like Humsafar se pehle you also worked with Marine Jabbar. I remember that was your Niyat. first. Yes. when we Bol met and the Niyat first is time. before Yeah. Humsafar. Yeah. Niyat was a big flop. But I loved it. I really liked it. Yeah, I did.
I met Humayun there and he was amazing. I remember because I met you then and with Mahira Fizan was Haq amazing. and you were transitioning from that MTV Oh VJ my thing. God, really? Yeah, You remember? yeah. So different things, you know, like after Hamsafar, I didn't want to play this role, so I got Shahrazad, which was, I had read it and I loved it. I still love it actually. So I want to keep doing different stories. And that's how I choose it. मुझे एक dialogue या 2 dialogues भी अच्छे लग जाते हैं. Yeah. That's why actually when someone says ना बहुत अच्छी script है, बहुत अच्छी script What was it about this role? Quad-e-Azam Zindabad wala. More than my role, it was these guys. वही मैं कह रहा था. Okay, if they're involved, you're like, okay, I'm in good hands, right? Yes. Yeah. I mean, I wanted to experience it. We've tried to work many times before. And so I think the timing was good and we just wanted to. Yeah, before COVID. Yeah. Before COVID. And it was just the right time. I wanted to experience Fizan, Nabil, Fahad Mustafa. But how does it feel like having a film for 2 years? Like it's a baby, right? So you're in labor for 2 years now. Are you did you just take my TV analogy and now I was asking Nabil as well and he's like, I got to work on the VFX and make them better. But what was it like for you guys? Kab aayegi kya? Is it? It was, I'll tell you why. The pandemic was everybody. COVID was everybody, right? So failure or success is a very isolated thing in your life, right? This was collective. जब आप fail होते हैं, आप अकेले fail हो रहे होते हैं, आपको तकलीफ होती है. Success भी at the end of the day, हालांकि लोग आते हैं, वो एक होती आपकी ही है. Right. तो ये जो था ना, ये collective था. And that's why, by the way, you stayed at home and didn't feel bad. You didn't feel कि, oh, race है और हम लोग, no. I hope that we can actually stay home and not feel bad again when the world is still moving. True. I mean, I guess it made the film better. And I hope the cinema going audience is back. Inshallah. To the whole thing of going to the cinema. आप देखिएगा. मैं तो सर देखूंगा. और फिर यहाँ बैठ के सबको बताइएगा. अच्छा बुरा जो आपका दिल करे, लेकिन बताइएगा. मुझे उम्मीद तो यही है कि अच्छी लगेगी because I've never disliked any of his films or your films. Lovely, thank you. Fahad bhai, how do you keep that energy up on Jito and then go do all these other things? What other things? Listen, if he was doing Jito today, you think he could have done this? I don't know how anybody could have done it, but he's so active within Jito as well that I'm like, how is he doing it right now? Oh, it's honestly, it's something that everybody must watch once in their life. It's like Disney. It's like live watch it, right? Live. Yeah. कुछ कटता है उसमें से? जीतो में से it's live. It's live. It's live. Yes. So 3 घंटे तो 3 घंटे ही हैं. अगर 3 है तो 3 है, अगर 2.5 है तो 2.5 है. और अभी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, नुमान साहब के साथ ही था आपका, और वो कह रहे थे कि आप करते कम चीज़ें हैं जी, लेकिन वो नुमाया और लोगों को दिखाई ज़्यादा जाती हैं, तो ऐसे लगता है कि आप हर वक्त बिजी हैं. आई थिंक ये तो होता है सक्सेसफुल लोगों. अभी माहिरा ने आपको क्या बताया, 4 सीरियल किए इसने ज़िंदगी में. हाँ. But she is Mahira Khan. There's so many people who've done 40, 50 serials. You might not know the names of those serials. Yeah. But they're on TV all the time. So it sometimes it's a curse also because you tend to make less money because you're doing just 1 project or 2 projects or आपका entire career is. But you have commercials that pay really well. नहीं, of course I'm not saying money wise कि हमारे साथ कोई ऐसा मसला है. But मेरे साथ ये जब मैं ड्रामे करता था तो होता था. हाँ. कि मैं 1-2 करता था तो वो नोटिस हो जाते थे. एंड बैक देन उस वक्त हम टीवी एंड ARY हैड अ पॉलिसी दैट एक उसमें ना एक एक्टर के 2 ड्रामे नहीं हो सकते. एक सीजन में हाँ. सो अगर अब इसका ड्रामा बहुत हिट हो गया है, अब इसका एक ही कोई आएगा और बाकी जिसका हिट नहीं हुआ वो कमबख्त 4 कर रहा है. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ही एंड अप मेकिंग मोर मनी देन द पर्सन who's actually a success. Yeah. तो because आपको लगता है अरे ये इसमें भी आ गया, अरे ये इसमें भी, उसको कोई नोट ही नहीं कर रहा. लेकिन dramas pay very little. I mean, at least मेरा experience में. Does it ever get to a point where it pays enough? Oh, drama buddy, wise? what is wrong with you? कुछ ड्रामे में कितने पैसे? So you know what? I've heard that people get paid a lot. Of course they do. मैंने जिंदगी में इतने कमाए नहीं. Of course, there is an example right here. No. I'm telling you because. Yeah, I don't know if I should say this, but when I was doing this drama, literally, I was like,
like, how do I know what I should get paid? There's Right. no price to it, you know. No, At least but for certain I people, didn't you know, can't na. put up a price. 5 dramas. देखो जरा गाँव से क्या What did you say? If you're doing 5 dramas in 6 months. It's a lot of money. Is it? Okay, it can be then. Okay. I'm just at the lower No, round. Now, no, as in, no. जब I से just did the जब से lower तो one. मैंने प्रोडक्शन शुरू की तब से तो ऐसे ही है. Now is when. सर हमने YouTube से छलांग मारी. अरे भाई वो तो मैं तुम ये 3000 सारा पर capture डे हो. तुम क्या बात कर रही अच्छा हो? ठीक है ना, तो मैं ये कह रही मैं हूँ वहाँ से ना. गेन चढ़ाऊंगा, मुझे सुनाई दे देगा कि नहीं, में क्या नहीं, बात हुई थी. नो नो बट उस वक्त उस पैसे की अहमियत भी थी. ऐसा नहीं उस वक्त जो ये बता रही नंबर वो ठीक ठाक था. लाइक आई डिड अ सीरियल जिसमें मुझे सुनो ना नहीं, listen, I think we're talking about very different years also. डिफरेंट सिनारियोज आल्सो. हाँ. तो अब तो मुझे 4 लाख रुपए दे रहा था एक सीरियल में कोई, हाँ. और मैं घर आके मैं बोल रहा था ये पागल हो गए. और 60 दिन की एक्टिंग है. Oh, I remember when I कितने दिन first की got acting है? offered a commercial also. सोचे आप. तो दिन के कोई 10,000 टाइप. No, I'm आई just. वर्क फॉर 3000 पर डे. बट अच्छा, तो आपने सीधा ड्रामों में एंट्री मारी और उसके बाद यू बिकेम अ प्रोड्यूसर. Yeah. So as a producer, then how do you select a script, or do you select a writer and then you do I tell want them? to hear this. So how does, because you have 60 dramas or something, 64 dramas as a producer under your belt, right? By now, Over 100. I'm also. 100. Yeah, over 100 now. And you did Barma Khiladi right now for YouTube. Hold up. You have produced how many? Alhamdulillah. Mashallah. Yeah. Oh, that's tough. That's एक tough. 100 ड्रामे मतलब आप obviously oversee ही करते होंगे क्योंकि इतना ज़्यादा involved नहीं हो सकता बंदा 100 देखो ड्रामा. इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन प्रोडक्शन. जो इस तरह की प्रोडक्शन होती है टेलीविजन प्रोडक्शन, इसमें यू कैन ओनली pick a few projects and decide कि you know I'm going to put my complete energy into this one, and rest you simply depend on people that you think are okay and you know उनकी opinion ठीक होगी. So Yeah, there's you channel pick the involved, right there's content teams involved, there are directors who want to pick a certain story and then you just go ahead with it. So it cannot be just one person's you know काम सारा. You can supervise, आप उसमें अपनी चीज़ें कर सकते हो. But sometimes I simply just let go. Like if you're a channel and if you'll tell me, yeah, this is something that we want to make, I'll make it for you. I don't have an agenda there कि नहीं यार, I want to create something like that. I can, but I pick that project. हाँ. I do not dictate in every project. But most of the times I tell you the projects that I pick, वो उसमें से 30-40% नहीं चलते. जब नहीं चलते तो फिर मैं भी ये realize करता हूँ कि यार it's also a business. It's not just कि आप सिर्फ जो है ना अपना दिमाग, sometimes it doesn't work. तो आपको अगले की माननी चाहिए. Like I was listening to Karan Johar the other day and they were sitting on a round table और ये सारी, अब they're big filmmakers. कमाल. And people that we think कि इनका बहुत ज़्यादा कहानी आ जाती होगी, even they do focus groups. You know कि किस टाइप की स्टोरी चलेगी, अच्छा, किस टाइप के एक्टर के साथ काम करना चाहिए. filmmaking by committee is a little bit of a diluting. But that's what it is. Auto You've been watching all that cinema जो कि ऐसे ही बना है. Sorry, I have to interject. हाँ. Do you know that you're saying that it becomes a commodity, right? I mean, my favorite filmmakers are people like Woody Allen is one of my favorite filmmakers of all time, and he always writes and directs, and he never has a focus group situation. Wait, no, hold up. You know what? I've been obsessed with The Godfather these days. Why? Because I've been watching this show called The Offer, which is about the making of The Godfather. Oh, it's interesting. Brilliant. So I've been going crazy, like geeking out. And actually, Francis said that Francis. Ford Coppola. Those He didn't want to make that film. Wait a second. He talked about, and the producers of it, which was Robert Evans, he talked about how film is the only medium that you can actually test. So they tested Godfather Part 2 ka last scene. Godfather, they would test. Film is the only medium where you actually have time and the liberty to change it all around. So actually it's not that. I mean, some of the films like whatever you've been listening to, I think most of it is basically a hoax.
What? I don't know. My whole belief system has been destroyed. Listen, you know what? Because Whatever you we have a certain belief कि जी Hollywood has a certain criteria और इसके और सब दिल से निकल रहा है. Oh come on. I'm telling you, this is मैं आपको what I'm saying. एक मेरे We're not willing to listen our stories at all. Otherwise, हमारे पास हर दूसरे आदमी के पास ऐसी story है. I mean, I think Sholay, those man. Think about Sholay also. Like, these I'm big talking budgeted about- films need to be like that as They've well gone- because there's so much money going into it. But these small indie films can experiment, right? So Of course. Filmmakers like Steven Spielberg who are making $100 million film, they would want to have it tested and they would be a part of that process. Right, But right. Wes Anderson's first film, Wes Yes. Anderson's first film was shown to a focus group and everybody said this is shit. Right. And he Similarly, said one good comment he got, and he said this is my audience. this is my. And he's won Oscar. So what he's talking about. So there are examples contrary to this Absolutely, one. but he's And I talking think about there are two Karan, types right? of filmmaking. So तुम मानने Both को are तैयार ही good. नहीं. I enjoy Jaws. yeah, okay, but he's talking about Karan, who is a very big production house and Big very man, successful, right? Yes. So he will obviously want to have the pulse on the larger audience. Of course. Right? Yes. That doesn't mean that he probably won't. I mean, I think he would give sort of. वो 100 करोड़ खर्च रहा है तो वो चाहेगा कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम से कम उनको कोई एश्योरिटी तो मिले. हमारे जो टीवी है हमारे पास चलो 100 करोड़ नहीं 100 रुपए है हमारे पास. 6 करोड़ का होता है एक ड्रामा वैसे. हमारे लिए 100 रुपए बहुत अहमियत रखता है ना. हाँ. तो हमारे लिए 100 रुपया जो है वो 100 करोड़ है. तो अगर हम इस चीज पे काम करते हैं ऐसे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे. नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है कोई. है तुम्हें प्रॉब्लम ना. नहीं मुझे अपनी पर्सनल अप्रोच से प्रॉब्लम. आप कह रहे थे अभी आने से पहले यू सेड कि मैंने तुम्हारी कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस देखी. नो इट्स नॉट डिस्टर्बिंग एज इन सी मेरे हिसाब से आप गाली यहाँ दो या टीवी पे तो गाली है. हाँ गाली. ठीक है ना. मैं अपनी माँ के साथ यहाँ भी नहीं सुनना चाहता टीवी पे भी नहीं सुनना चाहता. तो इसमें क्या गलत है. ये तो खत्म हो गई बात. गॉडफादर में भी बहुत सी गालियां और बहुत सी. मैं माँ के साथ नहीं देखी गॉडफादर आज तक. तो बस अब इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी माँ ने अकेले में देखी होगी. ठीक है मैं साथ नहीं देख पाता उनके. सो आई वुड वांट के जैसे मुझे ऐसा लगता है आप लेटली देखें हॉलीवुड में हर जगह ऐसा कंटेंट वो सिनेमाज में रिलीज करते हैं जो कि PG-7 हो PG-8 हो वो बहुत ज़्यादा चले. व्हाई? बिकॉज दे वांट द एंटायर फैमिली टू वॉच इट. दे डोंट वांट टू डिवाइड देयर ऑडियंस and tell you know this is not for you. They want it for everyone. Of course. Also, like you said, it's a business. Now I can talk as a smaller Artist, producer, yeah. right? Yes. Because again when you start off being a producer, मजा आया? बारवा खिलाड़ी. This is the first one? Barwa Khiladi and then Ek And Nigar. Nigar, yeah. I haven't seen that. Oh, you sure? Is it out? Yes, it's on Okay. YouTube. Oh, But- YouTube. Okay, I'll watch So it. it's a small telefilm. But the thing is, and my co-partner says, I'll never make money with you. You ain't gonna make me money because at the end of the day, sort of, you've got to have one project that sort of feeds you and one project which makes you money. And Scorsese said it, yeah. right. And so as an actor, ads making me money, this doesn't, that's fine. But for an out-and-out producer, that person is like... So you're speaking as a producer. Of course. Right. See, I have a That's what different he's- take. When it comes to acting, I feel completely differently. But then you should, be brave enough to say no. What I say is that if I आपको अगर अनुराग कश्यप कहते हैं कि आप ये जमीन पे लेट के गंदे मुझे मैले नबील कहेगा तो कपड़ों मैं में- कर लूंगा. मुझे अनुराग कश्यप की क्या जरूरत है. मैं आपको सच बात बता रहा हूँ. As long as I believe कि You have to believe that this is... हम सिर्फ नामों को लेके क्यों इतना परेशान हो रहे हैं. हाँ. आपको या तो स्क्रिप्ट या तो कहानी या आपको ट्रस्ट वो आपको किसी पे भी आ सकता है. उसके लिए बड़े नाम हो सकता है. स्टीवन स्पीलबर्ग मेरे लिए मैंने वो वैसा इसलिए ना कहता हो. हूँ कि नबील गालियाँ नहीं यूज करते ना अपनी. मैं उस तो गाली एक्चुअली चलो- नामालूम अफराद में एक गाली थी. हाँ ठीक है. या शायद 2 थी और वो भी एक तरीके से बोली गई थी पता ही नहीं चल रहा था कि गाली है कि नहीं. बात यह है कि वो सिर्फ वही नहीं था. हाँ. आप अचानक से अगर हम इस तरह की कॉन्वर्सेशन, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी चीज़ें सब देखें. बिल्कुल. तो मुझे उस पर मुझे अच्छा लगता है. अब वो बाहर किसी को नहीं तो अच्छी बात है, वो उसके लिए ठीक है. It depends on the subject. It depends. Imagine Gangs of Wasseypur without it. Yeah. Can you? Imagine. It was You can't- Satya without or the Casino galis. or Satya. the Satya was Goodfellas. Gangs of Wasseypur without Or any galis. Quentin Tarantino film. Yeah. Absolutely. But Yeah. can you imagine? I don't know, like a pretty Umrao Jan woman. Ada. Can you imagine a galis. pretty woman with? और हम आपके हैं कौन कौन with with गालियाँ. galis? With galis. So It doesn't work. Yeah. Exactly. So
what has happened is that in this, you know, I don't think I should say woke, but in this new culture of, is it cool enough? What is cool for you? It's cool. Because what's cool for me may not be cool for you. May not be cool for him. And प्लस राइटर के मिजाज पे भी तो होता है ना, अगर एक बंदा डार्क सब्जेक्ट मैटर से मुतासिर है और उसने कोई डिस्कस करनी है, मर्दाना कमजोरी लेट्स से उसने डिस्कस करनी है, व्हिच इज वन ऑफ माय वीडियोस टाइटल्स, अगर उसने डिस्कस करनी है तो वो फिर किस तरह अवॉइड कर सकता है अजीब लैंग्वेज उसके अंदर, वो अवॉइड नहीं कर सकता, जबकि मर्दाना कमजोरी का नामालूम अफराद में भी आई थिंक थोड़ा बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है, एक्टर इन लॉ में था, सॉरी। सो हमने किया, तुम देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। आपने तरीके से किया होगा, बस तुमने किया तरीके से नहीं, बस देखो ये फर्क। But again, आपकी ऑडियंस बट somehow सक्सेसफुल चल गई वीडियो। Yeah, so but then there you go, you are। तो मैंने 2 रुपए में बनाई ना, मैंने खुद सारे रोल मैंने खुद प्ले कर दिए, मैंने कहा पैसे लगे ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता। So then you probably are the Wes Anderson who took that one comment and said, this is my audience, and you stuck to your gut, right? So that is what we all do as artists, actually. We should learn to coexist. You know, we just... Hence, you should not say that everything that I've been taught is a hoax. Oh, that's my belief. Which is why that's I'm my belief, no. But it's not a hoax, that. But I'm on your show. Agree I respect to it. Sir, this is my way of telling you that we are coexisting. This is why it's not a hoax, because you're here. That proves it. Yeah, I mean, well. So guys, Quad-e-Azam is coming this Eid-ul-Azha. Are you thinking about it or are you asking me? No, I'm telling you. Of you. course it's coming out, inshallah. This Eid-ul-Azha, Quad-e-Azam Zindabad, and really, I'm excited all about of you will be entertained. It's just such an entertaining film, inshallah. And Numan has made. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you so much. I hope you don't mind me. Of course. क्या हो गया? Disagreeing in some light way. I love you. I love you, sir. I love you. But it's good to disagree. हाँ. And it's okay. It's okay to not get angry. नक्सीर ना फूटे, चाय ना गरम हो. Of course. हाँ.